5 बजे आने वाला था. My friend came. He came directly from Bhopal doing the raids. तो जो इनकम टैक्स की रेड चल रही है वहाँ से डायरेक्टली इधर आ गया क्लास में मिलने. आई गॉट लेट. रेड मार के आया डायरेक्टली. So have you got a generalized idea regarding this, the grasslands? Now the next thing regarding this grassland, the same grassland is the steppe grasslands are true grasslands. What do you mean by true grasslands? True grasslands means कि यहाँ पे there is no trees, यहाँ पे there are pure grasses, there is absence of trees in this region, and therefore these are the true grasslands. Savannah में हमने किया था कि there are trees, but here there are total absence of trees. They are soft, juicy grass. And therefore allows cattle rearing. It allows the cattle rearing. Because of this cattle rearing, these are major zones of extensive commercial mechanized farming regions of the world. And why you use extensive commercial farming, for rice or wheat? For wheat. And therefore this is the region of wheat production. Extensive, very large farms. Commercial, only one type of a crop is grown, and crop is grown for the market. Mechanized, mechanization is used. On the other hand, developing countries may, like India, there is intensive subsistence agriculture. So do you know the difference between the extensive versus intensive subsistence agriculture and the mechanized farming? What is the major difference between the intensive and the extensive agriculture? Area. ये तो ठीक है कि area किसमें ज़्यादा होगा? In the extensive farmings. Because there is a dominance of one crop. So, देखो, I am asking you one conceptual question. What is the difference between intensive farming, extensive farming and mixed farming? Intensive farming, extensive farming, mixed farming. Intensive farming, area is small. Intensive farming is done in the regions जहाँ पे population density is very high and agriculture is bit traditional. Extensive farming is done in the regions जहाँ पे area is big, population is less, therefore bigger farmlands. Because the population is less, it is very obvious that this will be mechanized. Because the population is less, obviously they won't be producing for their own consumption, but they will be producing for the market. This is one difference. तीसरा आता है mixed farming. So mixed farming is done in both developing nations as well as developed regions. In the regions जहाँ पे population density or the land is small, and because of that, both agricultural crops and the animal rearing is done on the same piece of the land. यहाँ पे नहीं है. So 3 keywords regarding this: extensive, intensive, and mixed. Obviously farming. So this is generally done in developed countries
This is done in developing countries. This is done in both developed and the developing nations. Second is more land, less population. This is exactly opposite. Population density is high, and therefore pressure on land is more. यहाँ पे again the same thing, population density is high, pressure on the land is more. मैं आता हूँ उस पर, वो टेक्निकल पॉइंट है, आई एम कमिंग. जनरली wheat, single crop, generally rice, and यहाँ पे both farming and animal rearing on same piece of the land. इसलिए हम कहते हैं इसको mixed farming. On same piece of the land. Now, the technical concept. What do you mean by productivity? Agriculture productivity मतलब क्या? How it is different from production? Productivity is एक एकड़ में से कितना निकलेगा? That is productivity. Production total कितना निकला है? That is production. Where is production higher? Extensive, intensive, mixed. Extensive. And where is productivity higher? Where is productivity higher? Intensive. Why? Because you are putting all your whatever energy is there in the smaller piece of the land. So एक एकड़ में से whatever we are getting, that is more as compared to the extensive farming. But ऐसे ही होता है. India productivity is less because of some technological reasons. But in general, productivity of the land is always greater in intensive farming. Example China, example Japan, as compared to USA. वैसे भी you see total production of farm, हमारे यहाँ पे the farms are so less. यहाँ पे farms are very big. So they will apply lesser inputs because machines है etc. They won't be applying that much. Here will be applying everything here. So यहाँ से per acre productive will be greater. यहाँ पे total production will be greater. यहाँ पे problem will be especially of disguised unemployment or one more technical term है जहाँ पे the net production is zero. What is that? Which unemployment? Which one? यहाँ पे there will be no problem of an unemployment. So this is the technical point. Though production is greater, you have to write here, though production is greater. Though production is greater, per acre yield of the land, per acre or hectare जो लिखना है, yield of the land मतलब productivity is less. Productivity is less in extensive. Intensive में because farmer has less land, therefore inputs are more, comma, each and every part of the land is cultivated. इसलिए intensive. Hence, productivity is greater, but production is less. Hence, productivity is greater, but production is less. Getting the difference? But over the period of time, क्या होगा? यहाँ पे they will keep some, because there is less pressure, they will keep some land खाली during the dry season. यहाँ पे
एक के बाद एक 3 different cropping patterns. So ultimately the fertility of the soil will reduce. So that is the problem in India. इसमें mixed farming is also an example of intensive agriculture. Mixed farming is also intensive agriculture. Can you tell me any region in the world जहाँ पे intensive agriculture or mixed farming is being done? Best example is Europe. क्यों? Population ज़्यादा है, though it is developed, population ज़्यादा है, land छोटी है. So intensive agriculture is done in Europe. Mixed farming is done in Europe. So will steppe grasslands have less rainfall as compared to the other regions? Yes, grasslands have less rainfall. But why the grasses are not thorny? Because it is a cold climate. Snowfall will be there during the winter season. Between 35 to 45 degree latitudes. Gulf of Mexico region. Second, China type. Obviously बताने की जरूरत नहीं कहाँ पे. China, South China Sea region. And third, not at all important. सिर्फ आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं because this is not biome, this is climate. हम नहीं लिख रहे चाइना बायोम. बायोम ट्रीज अलग होनी चाहिए. क्लाइमेट ट्रीज वही है. एवरीथिंग इज सेम. द ओनली थिंग इज लोकेशन चेंज हो गया. अदरवाइज यू विल ऑल्सो फाइंड योर deciduous trees only. बट लोकेशन चेंज हो गया. इट इज स्लाइटली डिफरेंट and therefore it is just a subtype of climate. कहाँ पे? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका. बस ये 3 जगह मिलता है ये क्लाइमेट. यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर एल्स. इफ यू रिमेंबर Gulf Stream, if you remember Kuroshio current, if you remember Agulhas current. So what is this? This is a type of a climate that is modified by warm currents. So don't write anything. Pehle we will write climate. First, China type. थोड़ा अलग है, therefore China type is influenced by seasonal reversal of winds. China type is influenced by seasonal reversal of winds. Is influenced by seasonal reversal of winds. And therefore is known as temperate monsoon. And therefore is known as temperate monsoon. Is known as temperate monsoon. बस यूपीएससी यही पूछती है, टेम्परेट मॉनसून कहाँ पे है. इट डज नॉट गो इनटू डिटेल. सेकेंड पॉइंट,
Heavy rain due to strong tropical cyclones. Q tropical cyclones are strong because of ocean currents. Because of warm ocean currents. Because of warm ocean currents. Next point. Just a minute. So why these are three different types? These are three different types because three different types of crops are grown. Not at all important, not at all important, important a Gulf type. So Gulf type on the eastern coast of USA. Gulf type on the eastern coast of USA. Gulf type on the eastern coast of USA. Major crop, tobacco. Major crop, tobacco. These are the best tobacco growing regions of the world. And sugarcane. And sugarcane. Sugarcane. Which country has the highest productivity of sugarcane in the world? Highest productivity, not production. Cuba. Example, Cuba. Highest productivity of sugarcane. मतलब सबसे ज़्यादा sugarcane. Highest productivity of sugarcane. Fine. Which country is famous for tobacco? Cuban cigars. Again, Cuba. That is why you should remember Cuba. तो इसका गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट कौन से तीन रीजन्स में है? कैरिबियन आइलैंड्स, क्यूबा एंड दिस थिंग. सो क्यों शुगर केन है इतनी ज्यादा कैरिबियन आइलैंड? और इन सिंपल वर्ड्स, क्यों इतने ज्यादा इंडियंस है कैरिबियन आइलैंड में? क्योंकि एज अ शुगर केन प्लांटेशन वर्कर्स. क्यों शुगर केन है? बिकॉज ऑफ द गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट. फाइन. सुनील नारायण ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल. इंडियंस, माइग्रेटरी इंडियंस. उससे पहले शिव नारायण चंद्रपाल ले लीजिए, माइग्रेटरी इंडियंस. चाइना टाइप में क्या ग्रो हो करेगा? चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होगा? राइस. नो नीड ऑफ राइटिंग सेपरेटली. नताल टाइप ऑफ क्लाइमेट. नताल टाइप ऑफ क्लाइमेट. Important for sugarcane. Important for sugarcane. Especially along. These questions come for map pointing. Especially along the Orange River and Limpopo River. Especially along the Orange River and Limpopo River. Where is Orange River? South Africa. Where is the Limpopo River? Black. Orange, black. South Africa. Fine. Open the map of South Africa. Tell me which river forms a boundary between South Africa and neighboring regions. ये भी बता दो कि कौन सी river drains into Indian Ocean, कौन सी river drains into the yes.
Limpopo in Indian Ocean, Orange in Atlantic Ocean. कौन सी बाउंड्री फॉर्म करती है बिटवीन दिस एंड नामीबिया, साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया? ऑरेंज, जिसको कहते हैं ऑरेंज वाल सिस्टम. And one most important question, which is the only river in the world that crosses Tropic of Capricorn twice? Which one? Limpopo या Orange? Limpopo. So which of the following is correctly? देखा लिम्पोपो? याद रखना लिम्पोपो एंड ऑरेंज. ऑरेंज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज 4 ही रिवर है वर्ल्ड में जिनका नाम कलर्स के ऊपर है, एंड दिस आर द 4 रिवर्स. टेल मी विच आर द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच. सी पहले वोडाफोन का नाम क्या था? ऑरेंज, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट इट केम फ्रॉम अफ्रीका. सो उसके बाद क्योंकि साउथ अफ्रीका, सो ऑरेंज रिवर. यू जस्ट शुड हैव एन आइडिया, एंड दिस रीजन इज वैसे भी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू ऑलरेडी नो दिस जीके बेस्ड क्वेश्चन. साकू, साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन इज द ओल्डेस्ट कस्टम्स यूनियन इन द वर्ल्ड. ये जो रीजन है, दिस इज द ओल्डेस्ट कस्टम्स यूनियन इन द वर्ल्ड. सो दिस 5 कंट्रीज जो नीचे है साउथ अफ्रीका के आसपास, बिटवीन दिस रिवर, ये सारी कंट्री. यू कैन इजीली फाइंड स्वाजीलैंड, नया नाम अब जो 2 साल पहले चेंज हुआ, एस्वाटिनी इज द न्यू नेम ऑफ स्वाजीलैंड. आपके एटलस में अभी भी स्वाजीलैंड होगा. दिस 2 कंट्रीज आर लोकेटेड इनसाइड अ कंट्री. साउथ अफ्रीका के अंदर 2 कंट्रीज है, देखा?
This entire is South Africa, blue color. This is Lesotho, and this is Swaziland. It is not a state of South Africa. These are the countries inside a country. That is why this region you should know. एक कुछ तो अलग है ये. Landlocked नहीं, locked from South Africa on all the sides. Generally ऐसे states होते हैं, but this is a country. These are the names, Hongda and Songda. The name of Red River and Black River respectively, Hongda and Songda. Black River. इतना सब डिटेल में मत याद रखो. होंगदा सोंगदा क्या है, कहाँ पे है, वियतनाम. न्यूज में इसलिए मैं दे रहा हूं. See, just near the Hongda River is one of the major centers जहाँ पे Modi inaugurated a major monument when he went for the ASEAN summit. So, but you just do know this river. मोदी वैसे बहुत जगह गए हैं, but still जो जो important areas है, we should be doing this. So why it is found only in the northern hemisphere? Why not in the southern hemisphere? Because it is located in the interiors of the continents, not at the coast. And in the interiors of the continents, land is present only wider in the northern hemisphere.
थोड़ी मैंने टेक्निकल लैंग्वेज ली है, बट इसका मीनिंग ये है कि दिस इज द टाइप ऑफ अ क्लाइमेट दैट शुड बी लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. ये कॉन्टिनेंट्स आर wider only in the northern hemisphere, but in the southern hemisphere, as the continents are narrow, there is a moderating effect of the water or sea, and therefore it is absent. Any problem here? Because it is a continental climate, and due to the narrowness of the continents in the southern hemisphere, moderate effect is moderating maritime effect, matlab sea ka moderating effect is dominant in southern hemisphere. और सिंपल आ सकता है ड्यू टू द लैक ऑफ लैंड, ड्यू टू द लैक ऑफ लैंड. Due to the lack of land. Can I continue? Can I rub this? Which countries you will call as Nordic countries? How Nordic nations are different from Scandinavian nations? How Scandinavian nations, Nordic nations are different from Baltic nations? Pol science के students. Baltic states, geography optional के students. So Nordic countries, किसके साथ अभी हमने एग्रीमेंट साइन किया है? Nordic nations. So this is a cultural region of North Europe, cultural region of North Europe and North Atlantic, which includes Denmark, Sweden, Finland, Iceland, Norway, Greenland, and Greenland cultural grouping, लिखो cultural grouping, and Faroe Islands. Where is Faroe Islands? किस कंट्री को बिलोंग करते हैं Faroe Islands? डेनमार्क को. Faroe Islands डेनमार्क को बिलोंग. Autonomous country of Denmark, ऐसा नहीं autonomous state of Denmark. It is the autonomous country of the Kingdom of Denmark. The people are known as Nordics. People are known as Nordics because of the racial characteristics. कोई करने की जरूरत नहीं. racial characteristics क्या है? They are different from Scandinavian countries. Because Scandinavia is used for Denmark, Norway and Sweden only. Scandinavia is used only for Denmark, Norway and Sweden. Based on 3 kingdoms of Scandinavia. Understanding what is the difference between Scandinavia and
नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक इज अ रेस ऑफ द पीपल जो वहां पे रहते हैं. स्कैंडिनेवियन, ये 3 किंगडम थे अलग अलग, एंड उसमें सिर्फ 3 कंट्रीज आती है. स्कैंडिनेवियन वर्सेस डेनमार्क. सो कौन सी 3 है? नॉर्डिक वर्सेस स्कैंडिनेवियन. कौन सी 3 है स्कैंडिनेविया में? नॉर्वे, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क. फिनलैंड नहीं आता, याद रखना. नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क. But Finland is a part of Nordic countries. Because this Nordic countries have same racial characteristics, very tall, very fair, very thin nose, blue eyes, golden hair, etc. जो है, and Nordic languages. What is the annual range of temperature? Somewhere around 90 degrees to 100 degrees. Summer temperature is as like us, 25 से 30 degrees, and winter temperature is -40 to -50 degree Celsius. So this region has extreme type of a climate. Why? You already know, because of its continental location. Or because it is away from the sea. याद रखना, this is the region which is going to get rainfall throughout the year due to polar jet streams. This is under the continuous polar jet stream. And because pani hai throughout the year, therefore vegetation is evergreen. But due to snowfall, therefore why the trees are conical in shape? To protect themselves from snow or frostbite. My early lecture, कभी लिखाया नहीं है, but I have told you this many times. Christmas tree, जैसे ही snowfall will occur, due to weight of a snow, it will slant down, and thus the snow will slide.
Wood is softwood here. So from tropical regions, we are coming to the temperate regions, जहाँ पे there is a dominance of softwood. And now tell me, are these good conditions or are these tough conditions for life? Means for the plants. Tough conditions. Therefore, species density will be great or species density will be less. मतलब number of species. So, next point is so point number 1, point number 2, point number 3. A fourth point you tell me, will the forest be very dense? No, sorry, we have written, I guess. No, so will the forest be very dense or they will be less dense? Less dense. उसके बाद will there be thick grass cover या नहीं होगा? Grasses होंगे? Logic use करो. Snow during the winters. No grasses. Fine. Now, will there be reptiles on this region? Like tropical evergreen, कि सांप है, बिच्छू है और सब मच्छर है? नहीं. Fine. Bichu means scorpion. Will there be? No. So, and they are found in pure stands. Pure stands मतलब if devdar तो only devdar. I have explained you this earlier. Pure stands of single species. हमारे tropical evergreen जैसा नहीं, there will be different species. And therefore, what will be the most important occupation here? Lumbering or wood cutting is the most important occupation. Kashmir में handcrafting, but not in the other regions. Art and culture India tropics छोड़ के है क्या art and culture? There are only few countries जो ईस्टर्न कंट्रीज है जहाँ आर्ट एंड कल्चर है, जो ईस्टर्न रिलीजन के कंट्रीज हैं. देयर इज नो आर्ट एंड कल्चर ऊपर.
Art and culture, China, Burma, India, Japan, and Southeast Asian nations. या वेस्ट एशियन नेशंस. बाकी तो आर्ट खरीदने आते हैं इंडिया के में. Example one, Sweden is famous for what? Matchsticks, जो मोस्टली हमारी माचिस की तीलियाँ आती है, that is softwood, and that is largest exporter in the world is Sweden. North America, that is USA and Canada, for newspaper print. जो न्यूज़पेपर आता है, इट कम्स फ्रॉम कनाडा और यूएसए. न्यूज़पेपर का जो पेपर आता है, इट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम वुड. So that is why India is leading importer of paper as well as exporter of paper. Fine? Because what you are writing here, this is highly processed paper. ये नहीं बन सकता अपने वुड से. अपने वुड से जो पेपर बनेगा, you have seen traditional greeting cards जो thick है, या शादी के कार्ड्स जो thick है, that is our paper. ट्रॉपिकल हार्डवुड है हमारा. दिस इज सॉफ्टवुड. दिस अभी इतना पल्प बनाया, इतना प्रोसेस किया कि वो पतला हो गया. बट इट विल बी ब्राउन इन कलर बिकॉज आवर वुड इज डार्कर, बिकॉज इट हैज मोर कार्बन. सो बिकॉज इट इज ब्राउन इन कलर, इसको इसके ऊपर फिर पूरा क्लोरीन से ब्लीच किया जाता है. सो याद रखना, व्हाट इज द पोल्यूशन दैट इट कॉजेज ड्यू टू पेपर इज क्लोरीन. And I guess I have told you earlier also, mostly जो शादी के जो कार्ड्स है, it is made from cow dung और elephant dung, because इतना ज़्यादा फाइबर है जो ट्रेडिशनल ग्रीटिंग कार्ड है. एंड देयरफॉर इफ यू टेक एनी शादी का कार्ड, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी. द रीजन इज बिकॉज आफ्टर मेकिंग दैट इट इज केप्ट इन परफ्यूम सो दैट द डंग विल नॉट. So next time don't put the any wedding card in the mouth. जो जितना अच्छा दिखेगा, जितना थिक है उतना it is made from dung. इसलिए if you see especially elephant dung, इसलिए उसमें ऐसे ऐसे दाने होते हैं. And though UPSC नहीं पूछेगा, बार बार टेस्ट सीरीज में you must be solving. This soil is known as podzols. Highly acidic, highly leached, and these are soils are known as podzols. So याद रखना podzol soils अगर, but UPSC इतना difficult नहीं पूछता because this then becomes podzols. Podzols means highly acidic soil. क्यों एसिडिक? बिकॉज ह्यूमस इतने जनरली डिग्रेड नहीं होगा यहाँ पे. इट विल स्लोली डिग्रेड एंड मोस्टली दिस रीजन विल बी वाई लीचिंग बिकॉज ऑल द स्नो विल मेल्ट ड्यूरिंग द समर्स. फाइन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द लार्जेस्ट और ताइगा या एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड. Is the largest forest cover in the world. Is the largest forest covers in the world. And the important animals, birds and animal species are. You already know what is the most important animal here? Snow leopard. Tiger. Siberian tiger. Fox. बर्ड्स करने की जरूरत नहीं है. फॉक्स.
The most dominant industry here is fur industry. Fur industry. फर इंडस्ट्री. एक और ग्लोबल टाइगर फोरम. ग्लोबल टाइगर फोरम. ग्लोबल टाइगर फोरम. व्हाट इज ग्लोबल टाइगर फोरम? किसने लॉन्च किया? कैन टेक डाउन. द ग्लोबल टाइगर फोरम is the only intergovernmental organization is the only intergovernmental organization is the only intergovernmental organization for the conservation of tigers. For the conservation of tigers. For the conservation of tigers. It was launched It was launched in 1993 at New Delhi. It focuses on saving कितने स्पीसीज ऑफ टाइगर है? 5 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर. 5 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर. 5 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर इन कितने कंट्रीज? 13 कंट्रीज. जिन कंट्रीज में कोई भी एनिमल है, इट इज नोन एज range. So tiger range countries. Tiger range countries. Tiger range countries. कहाँ पे है ग्लोबल टाइगर फोरम का हेडक्वार्टर्स? ओके, टेक इट. The third stock taking tiger conference. The third stock taking tiger conference. स्टॉक टेकिंग मतलब गिनना कितने टाइगर्स है. टाइगर कॉन्फ्रेंस was held in New Delhi in 2019. Was held in New Delhi in 2019. Next, it was organized by Global Tiger Initiative countries. अब ये और एक नया. It was organized by Global Tiger Initiative Council, not countries. Global Tiger Initiative Council. In collaboration with National Tiger Conservation Authority. Collaboration with National Tiger Conservation Authority. Tiger Conservation Authority. Who heads National Tiger Conservation Authority? Prime Minister. Next, the focus is on, don't write anything उसमें, Prime Minister, Environment. Next is the focus is on increasing the tiger population. Increasing the tiger population. अब थोड़ा बैकग्राउंड लिखो, क्यों इंडिया में हुआ ये? Because for the first time, global tiger population has increased in 100 years. For the first time, global tiger population has increased in 100 years. 100 years.
Fine. Global tiger population has increased in 100 years. सबसे ज्यादा टाइगर्स कौन से कंट्री में? म्यांमार, थाईलैंड, इंडिया, कौन से? नंबर ऑफ टाइगर्स पहले लिखना, इंडिया, लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इंडिया. कितने हैं टाइगर्स इंडिया में? 4000, 2000, 2026, 2226, 2226. ये लेटेस्ट डेटा है. पॉपुलेशन जो बढ़ गई है गवर्नमेंट के स्टॉक टेकिंग में आया नहीं है. अब यू शुड नो हाउ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, बिकॉज 2226 ये किसी लिविंग इसका पॉपुलेशन है. वो जब आपका पेपर सेट होगा, उसके बाद जब आपको एग्जाम होगी, उसके बाद जब आपका आंसर चेक होकर रिजल्ट आएगा, ये चेंज हो जाएगा. So they will give you a very generalized data in such questions कि in India more than 4000 tigers exist in wild, more than 5000 tigers exist in wild. Don't remember the कितने tigers है, कितने हैं? 2200, 2300, 2500, 2000 के आसपास. Fine? Because ये जो ऐसा डेटा है इसमें यू डोंट हैव टू रिमेंबर एग्जैक्ट, बिकॉज यू कैनॉट से इंडिया में आज इतनी जनसंख्या है, कल चेंज हो जाएगी, परसों चेंज हो जाएगी. राइट? सो इसमें दे गिव यू अ वेरी जनरलाइज स्टेटमेंट. सेकंड, इंडिया के बाद सबसे ज्यादा टाइगर्स कौन से कंट्री में? सेकंड रशिया. सेकंड रशिया. थर्ड इंडोनेशिया. बस इतनी जरूरत है. थर्ड इंडोनेशिया. लास्ट पॉइंट, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव. ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव has launched ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम. ये कब हुई थी कॉन्फ्रेंस इंडिया में? 28 जनवरी 2019. So that is why you should know. Global Tiger Initiative has launched Global Tiger Recovery Program. Global Tiger Recovery Program for doubling the tiger population. For doubling the tiger population by 2022. By 2022. क्या? स्टेट वाइज कर्नाटक. नेक्स्ट, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन 2008. ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन 2008. कहां पे? इन सेंट पीटर्सबर्ग. किस पे फोकस करना है? ग्लोबल टाइगर फोरम नहीं किया तो चलेगा. ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम यू शुड रिमेंबर, एंड यू शुड रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन सेंट पीटर्सबर्ग. वेयर इज सेंट पीटर्सबर्ग? रशिया. As a global alliance between governments, international organization, and civil society, full stop. The founding members were World Bank and Global Environment Facility. Global Environment Facility and International Tiger Coalition. And International Tiger Coalition. International Tiger Coalition.
सो किस किस के बीच है ये? वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एंड थर्ड इंटरनेशनल टाइगर कोएलिशन. व्हाट इज दिस? कुछ नहीं है, ये 13 कंट्रीज जिसमें टाइगर्स मिलते हैं उसका ग्रुप है. सो इंटरनेशनल टाइगर कोएलिशन इज द ग्रुपिंग ऑफ 13 कंट्रीज वेयर द टाइगर इज फाउंड. फाइन. नाउ व्हाट इज ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम? अभी रिवाइज कर लो. डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022. फाइन. एंड उसके लिए जो मीटिंग हुई थी विच वॉज गोइंग टू काउंट द टाइगर्स, वेयर डिड इट टेक प्लेस? इन न्यू दिल्ली. उसमें कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ? ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम. फाइन. सो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव इज द टाइगर ओनली एग्रीमेंट टू सेव द टाइगर्स. और उसका एक फोरम है विच इज नोन एज ग्लोबल टाइगर फोरम. क्लियर विद दिस? ग्लोबल टाइगर फोरम का एक बड़ा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव. सो क्विकली कौन? वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एंड जिन कंट्रीज में टाइगर मिलते हैं. नो यूएनईपी, नो यूएनडीपी, नो यूएनएफसीसी, नो आईयूसीएन, नो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ. फाइन. Is it non-governmental organization? No, it is intergovernmental organization. Fine. Third thing, Global Tiger Forum, not at all important. क्या है important है? Global Tiger Initiative. कहाँ पे हेडक्वार्टर? सेंट पीटर्सबर्ग. उसका एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल टाइगर फोरम जिसकी मीटिंग इंडिया में हुई इस साल. सो दे कैन आस्क यू ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव. उन्होंने क्या लॉन्च किया? ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम. उसमें क्या करना है? डबल करना है टाइगर के पॉपुलेशन को बाय 2022. गेटिंग दिस? फाइन. एनवायरमेंट इकोलॉजी इज नथिंग बट वेरी फैक्चुअल. यू विल हैव टू डू दिस. मीन्स tundra biome. What you will write in tundra biome? It is a permanently snow covered region. क्लाइमेट लिखने की जरूरत है? क्या लिखोगे क्लाइमेट में? समर्स आर कोल्ड, विंटर्स आर वेरी कोल्ड. So there is nothing to write in the climate. Soil ही नहीं है. There is a, so एक ही लिखेंगे. Which are the three species what are the three communities that are found in the ecological succession? Primary, seral and climax. Climax means big trees. So यहाँ पे big trees होंगे? No. Plants. क्यों? And what are the important species that are found here is, so tell me, pine, spruce, don't write. Pine पेड़ है, spruce पेड़ है, larch पेड़ है, rhododendron, lichens, moss, reindeer grass. रेंडियर्स किस पे खाएंगे? रेंडियर ग्रास पे ही खाएंगे. रेंडियर्स मिलते हैं कि नहीं यहाँ पे? यस.
It is just a kind of an moss only. It is a kind of an moss only. इंडिया में कहाँ पे? अबाउ द हाइट ऑफ 4,500 meters. In India, in Himalayas, above the height of 4,500 meters, which is nothing but a snow line. Is nothing 4,500 meters, and there is nothing but the snow line. Fine. Next point, snow line. Snow line. I'll come to climate change. यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, मतलब जिसके ऊपर परमानेंट स्लो मिलेगा, that is snow line. Next, tundra biome. Tundra biome is located above the tree line. Is located above the tree line. Snow line and tree line. वेरी सिंपल. जहां ट्रीज है वहां पे स्नो परमानेंट नहीं होगा, जहां स्नो है परमानेंट वहां पे ट्रीज नहीं होंगे. सो ट्री लाइन मैक्सिमम लिमिट जहां तक ट्री. आई एम गिविंग यू दिस. मंडे के लेक्चर में विल सॉल्व वन एमसीक्यू रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज. दैट इज वेदर द ट्री लाइन इज शिफ्टिंग नॉर्थवर्ड्स या साउथवर्ड्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. विल सॉल्व दैट लेटर ऑन. द इंपॉर्टेंट स्पीसीज हियर आर polar bear, next reindeer को क्या बोलते हैं दूसरा नेम? caribou. Lemmings. याद है लेमिंग्स? वैगनर्स. फॉक्स. फुल स्टॉप. The tundra biome does not have snow leopard. ये याद रखना. Snow leopard is found only in alpine tundra biome is after 4,000 meters. Only in alpine regions of Asia. स्नो लेपर्ड और किसी कंट्री में नहीं है. सो ऐसा है टुंड्रा रीजन में स्नो लेपर्ड है क्या? याद रखना नहीं है. फाइन. इट इज फाउंड ओनली इन द अल्पाइन रीजन्स ऑफ एशिया. अफगानिस्तान, चाइना, मंगोलिया, इंडिया, अल्पाइन रीजन्स. लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, the tundra biome does not have poikilotherm. याद ये नहीं रखना है, याद रखना है व्हाट इज poikilotherm. Poikilotherms such as frogs, lizards, etc.
frogs, lizards, etc. Poikilotherms are the animals. Poikilotherms are the animals. Poikilotherms are the animals whose body temperature varies at a very fast rate. Very fast rate. Very fast rate. Right? Internal body temperature, अंदर का. Their outside body temperature is they are cold blooded, but internal जो body temperature वो बहुत fast vary करेगा. So इसलिए they cannot survive in that regions. They can survive जहाँ पे variation है. So just you should remember poikilotherms मतलब क्या? Internal body temperature varies at a faster rate. Snakes, lizards and frogs. It is slightly different from that of cold-blooded. I'll do that cold-blooded later on. So I'll stop here. We'll meet directly now on Monday because today I'm just catching a flight to Pune.